नमस्कार। देश की सर्वोच्च पंचायत में जनहित पर होने वाली चर्चाओं के कार्यक्रम संसद संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति सिंह। ठोस कचरे के निपटान के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक 2016 राज्यसभा में पेश किया गया। संबंधित एजेंसियों के बीच समन्वय बढ़ाने, निगरानी व्यवस्था मजबूत करने और इसके लिए आम बजट में अलग व्यवस्था के प्रावधान वाला ये गैर सरकारी विधेयक कांग्रेस सांसद डॉ. सुब्बारामी रेड्डी ने राज्यसभा में पेश किया। सुब्बारामी रेड्डी ने कहा कि कचरे का उचित प्रबंधन करके ही स्वच्छ वातावरण और स्वच्छ जीवन का निर्माण किया जा सकता है। आइए देखते हैं इस मुद्दे पर सदन में हुई चर्चा के अहम अंश। Now Subbarami Reddy to move. Yes. Motion for consideration of I solid move the waste. bill. And then move and then speak. Yes. Okay. I move the bill to provide for the segregation and recycling of municipal solid wastage, use of recyclable waste in waste energy plants for generation of energy and transportation of non-recyclable waste into landfills and for matters connected therewith or incidental thereto. Sir, it's a very important bill. Actually, this is not only the present generation, even for future generation, this bill is very important. Well, I must say, now when the industrial growth is going, industry is operating, huge quantum of wastage will be generated. So when it's generated, normally what they say, they throw it into the very erratically, very indiscriminately. So now in the bill, what we suggest that you must segregate, and when you segregate, the useful wastage should be used for recycling and also create the waste energy. And not useful waste also should be systematically identified in a good places where they must do. But whereas now it's happening very haphazardly, it's going, which is a very danger for the society. And also I would like to say, sir, in the UPA 1 government, while bringing National Environment Policy 2006, they suggested so many bills, rules, regulations, and for the treatment system for recycling wastage, and also devising measures for environmentally safe disposal, very important. Actually, these problems are there, not only India, all over the world. Number of countries are very much worried, concerned that how best we can deal with the disposal of the wastage that is produced by the industrial production. Here, one more important is, even though there are so many rules, regulations instituted by the various governments for the disposal waste management, what we are finding, we are supposed to see that the Central Pollution Control Board of Ministry of Environment are supposed to coordinate with the state solution boards. But actually, to be frank, as I was actually chairman for this environment for 5 years, parliamentary committee, we don't find much coordination between the Central Pollution Control Board and state pollution boards. This is another big problem, and actually this is one of the reasons where we have failed. So this is the challenge before the government to take more steps to see that, to ensure that actually the smooth coordination goes between the Central Pollution Control Board and State Pollution Control Board. So now, there are various types of wastage being generated in our country. For example, biomedical waste, and also municipal solid waste, chemical waste, toxic waste, plastic waste, electronic items waste, high-level radioactive waste, nuclear waste. So in so many ways, so many channels, the society is actually facing this wastage. It is also estimated more than 10 lakhs tons of waste is generated in our country. Waste is largely composed of metals, plastics, paper, food, glass, and presently majority of waste is sent to landfills with only a small portion being used in waste energy plants and recycled. So now I would like to say per capita waste generation is increasing by 1.3% per annum in the country. With urban population, it is increasing at 4% per annum. India produces 42 million tons of municipal solid wastage annually, as I told already. So per capita generation of waste varies from 200 grams to 600 grams per capita. In the municipal solid wastage, there are 3 categories I would like to say. Compostable or biodegradable, which comes to 45%. This can be converted into manure. It's very important. When you get this type of biodegradable, if you convert into the manure,
where you are controlling the environment atmosphere, it's going to be a great asset also for the cultivation. Then internal material 45%, which cannot be recycled, it goes to landfill. This also must go landfill, not indiscriminately. They must select. I will draw the attention of the minister that such things must go into the selected landfills where actually it won't actually create again a very dirty atmosphere. And also, recyclable material is 10%. This can be recycled if there is efficient recycling. See, even though 10% can be recycled, converted into energy, virtually they are not doing it now. So after segregation, whatever is available, though this information is 10%, according to me, much more also is available for the recycling. There are so many rules regulating solid waste management in India, sir. Biomedical waste management handling rules, batteries management and handling rules, e-waste management handling rules, the plastic waste management handling rules, hazard and other waste management handling and transboundary moves rules, construction and demolition waste management rules, solid waste management rules. So many rules, regulations and acts have been introduced to here, but at the same time, we have still failed to have the achievement fully. So NDA government and Honorable Prime Minister had launched Swachh Abhinaya in the country. We welcome it, we are happy. But even then, domestic wastes are thrown on the streets. Construction waste are left unattended. Biomedical waste are disposed into municipal water streams, polluting the water further and making it dangerous. So the main reasons for improper management of waste, I would like to say, sir. Improper planning for waste management while planning townships. This is very important. So in the townships, whether in the industrial townships or even the urban townships or in rural areas these days, they are growing like anything and creating townships also. There you must have the proper planning for waste management. Similarly, impractical institutional setup for waste management and planning and designing in urban local bodies. Here also, as I said, they are not doing practically, they are having a lot of mismanagement in the planning and designing of urban local bodies. Lack of technical and trained manpower. This also must focus government. Then less experts and exposure to the city waste management using modern techniques and best practices. This also we have to focus. Need to create awareness among the public. This is a very important actually. Unless public cooperate, no rules, no government efforts will be successful. What I would like to know from Minister when he is giving reply, what is the actually government's efforts to making the public awareness? Actually, I propose the government of India should provide some funds to municipalities and also Panchayat Raj exclusively. See, when you said cleanliness and Swachh Bharati, you must use some funds also for them exclusively to use it for this purpose. In solid waste management rules, government has mandated duties for various agencies. See, here the issue is, all these things are to be dealt by the Ministry of Environment, Forest. All this has to be channelized and coordinated by the Central Pollution Control Board. So I have seen it, Central Pollution Control Board has limited actually capacity, limited machinery, limited actually technology, equipment and resources also, what I could see. Now it is the government must strengthen the Central Pollution Control Board in a big way. The Central Pollution Control Board, besides controlling the pollution, they must have another wing to see that state pollution control boards act very effectively and see that in the wastage produced by the industrial area or the municipal areas or rural areas or in various other channels, how best they are actually using the rules given by the government. That's why, Deputy Chairman, sir, I am bringing to you the legislation through its very brief but very effective and pointed my legislation. Clause number 3 in my bill deals with the duty of waste generating unit and large manufacturing facility. Clause number 4 in my bill, which I now introduced, provides for duty of the municipal authority. This is a very important. Municipal authority all over the country have to play a very important role. Even though Government of India is not directly connected, but at the same time, it is the Environment Ministry's duty to see that municipality also have a very effective role and to implement the rules, regulations formulated by the Government of India in controlling the waste management. Clause number 5 in my bill provides penalty which includes imprisonment and fine. This is also a serious matter.
if there anybody in the government official machinery, if they won't actually carry properly the instructions and rules regulations, they should be penalized, I am proposing. Very important clauses. Clause number 6, which mandates the central government to provide requisite funds to state government for carrying the purpose of this act. So here the most important is the entire nation, government, Honorable Prime Minister, everybody wants Swachh Bharati and cleanliness and away from the atmosphere of the non-environment atmosphere. For this, mind, heart and money, 3 are important. So besides mind and heart also implementation, if there is no money, nothing can be done. So money funds means always municipalities will say we have no money. So therefore there should be some thinking, some application of mind of the government of India in their budget that yes, they must have some separate channel where they can give some, at least some little funds to the municipalities and make them also aware that, feel awareness, yes, this is very important. We must focus, even central government is giving little fund. I don't think it will give more funds for entire country, municipalities, rural panchayats also. Some even token money to awareness, how much government is committed. This is very important. Then the provision of this act should be in addition to this dereorganization of any law for the time being in force. So I request all my respected colleagues to support the bill. I also request Honorable Minister to support it. Thank you very much. Yes, a very good bill. I support. Now, Ananda Bhaskar Rapalu. Respected Deputy Chairman, the cleanliness and green India is the priority for our growing climatic, environmental, ecological challenges. From this perspective, the landfills surrounding the urban, cosmopolitan, metropolitan localities are not just landfills, they are landmines. And those landmines and the allied slums and the slum dwellers and their aggravating problems had to be looked into while thinking about the solid waste management. We have Central Pollution Control Board, we have Green Tribunal. Latest, the Central Green Tribunal on record mentioned that after the Namami Ganga rejuvenation program, not even a drop of Ganga river has been treated. सिर्फ प्रचार अभियान चलाए तो स्वच्छ भारत होने का नहीं है, निर्माण भारत, निर्मल अविरल भारत निर्माण करे तो ही स्वच्छ भारत होने का संभावना होता है. Have we ever revisited after 3 years of its inception Swachh Bharat Abhiyan? Union government is yet to revisit on the requirements and priorities of the Swachh Bharat Abhiyan. There is no waste management strategy in Swachh Bharat Abhiyan, either pertaining to the rural or urban or municipal corporation and cosmopolitan and metropolitan. How we are going to look at it? As on this date, we are yet to define about the wastage. Solid waste is coming in various sources. It is also having the chemical toxic contamination, and it is also having the recyclable, reusable wastage level. But when all into one, are we have any facility to burn the non-cyclable wastage? In India, even as a pilot project, we are yet to get plasma technology to utilize with the modern ultra energy generation capacities with which we can burn out the toxic non-recyclable wastage. Pune Municipal Corporation tried to have one ultra energy generation technology from which Prakash Javadekar ji
comes. But they could not utilize the plasma technology. With plasma technology in several nations, they are trying and successfully using to burn even glass and plastic. That will augment from the complications of the wastage. We are not able to look at the bio wastage, food wastage. We are not able to look at the industrial wastage. We cannot differentiate between the electronic computer wastage and other biomedical wastages. And these are complicating into landmines wherever they are being used as the landfills. And the slums, the lives of slums, as today happens to be the World Tuberculosis Day, infection causing tuberculosis, cancer, several types of fevers, and gastrointestinal complications are directly having the relevance with the cleanliness of the environment. But our commitment towards the cleanliness in its achievement, in its entirety, is just very, very pathetic. That is why demands are going. We in Delhi kindly remind about the fog and smog. Whenever there is sugar cutting season, whole of Delhi and its national capital region struck with smog. But yet we are not able to install any technological support in weeding out the complications of the sugar field burning. Central Pollution Board on record admits they are not having any control. And they are not allowed having the required human resource. When you are able to look at as towards the problem with a comprehensive nature in addressing, if you try to spend some amount for the prevention will also include the waste management strategy. Until and unless we have the solid waste management strategy, the Swachh Bharat Abhiyan is going to be just Prachar Abhiyan with Mahatma's glasses. On one glass we will have Swachh, on another glass Bharat. On Swachh, where it is written, there is no Bharat, and where Bharat is written, there is no Swachh. आप बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। जारी है गैर सरकारी ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक 2016 पर संसद संवाद। वेस्टेज को निर्माण करना रोज बढ़ते जा रहा है। आपने वेस्टेज को कम करने के लिए कोई रास्ता नहीं बताया। उसका खाली मैनेजमेंट और वेस्टेज ज़्यादा करो और मैनेज करो, ये ठीक नहीं है। जब तक इन प्रकार के गलत चीज़ों का उत्पादन जो रिसाइकलिंग नहीं हो सकते हैं इजीली, जिसके ऊपर बड़ी मात्रा में पैसे का खर्च होता है, तो कौन सा भी सरकार आएगा इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसा ही चीज़ का हम लोग उपयोग करें जो रिसाइकलिंग हो सकता है। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक 2016 को पेश करते हुए डॉक्टर टी सुब्बारामी रेड्डी ने कहा कि आधुनिक जीवन शैली में पहले से अधिक कचरा उत्पन्न हो रहा है। राष्ट्र के व्यापक हित में विधेयक को पास करने की मांग करते हुए टी सुब्बारामी ने इस दिशा में राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्थानीय स्तर पर काम कर रही अनेकों संस्थाओं के बीच तालमेल की कमी का मुद्दा उठाया। उनके मुताबिक प्रभावी कचरा प्रबंधन के लिए कृषि, रसायन, पर्यावरण, ऊर्जा और शहरी विकास मंत्रालय को आपसी समन्वय बढ़ाना चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कचरे के निस्तारण के लिए बनी व्यवस्था की लगातार निगरानी जरूरी है ताकि जिम्मेदारी तय हो सके। श्री बासवराज पाटिल जी। रेस्पेक्टेड डिप्टी चेयरमैन सर, आज देश के अंदर जो आने वाले दिन के अंदर है, धीरे धीरे एक वेस्ट सबसे ज़्यादा नगरों में उत्पन्न होता है। अभी जैसे विश्व की आंकड़ा बताते हैं, आने वाले 12 साल के अंदर सिटी पॉपुलेशन विल गो 70%, रूरल पॉपुलेशन विल बी 30%. It means cities will be the headquarters of the all type of waste
मटेरियल। इसके जगह कहाँ होते हैं? बड़े बड़े फैक्ट्रियां हैं, रेलवे स्टेशन है, हॉस्पिटल का परिसर है, पब्लिक फंक्शन करने के जगह है, फेस्टिवल है, मेला लगते हैं, टेंपल के फेस्टिवल चलते हैं। ऐसे कई जगहों के अंदर इसका बड़ा समुद्र निर्माण होता है। ऐसे स्वच्छ भारत के नाम पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आने के बाद एक बहुत बड़ा अभियान लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक बड़ी मात्रा में धन की राशि म्युनिसिपैलिटियों को दिया गया है। परंतु मेरा कहना ये है, वेस्टेज को निर्माण करना रोज बढ़ते जा रहा है। आपने वेस्टेज को कम करने के लिए कोई रास्ता नहीं बताया, उसका खाली मैनेजमेंट और वेस्टेज ज़्यादा करो और मैनेज करो, ये ठीक नहीं है। जैसा एक तरफ प्लास्टिक को प्रोडक्शन को बंद करो आपने नहीं कहा, और कुछ गलत चीज़ों को रोकने के लिए आपने नहीं कहा। जब तक इन प्रकार के गलत चीज़ों का उत्पादन जो रिसाइकलिंग नहीं हो सकते हैं इजीली, जिसके ऊपर बड़ी मात्रा में पैसे का खर्च होता है, तो कौन सा भी सरकार आएगा इसे रोकना मुश्किल हो जाएगा। तो वैसा ही चीज का हम लोग उपयोग करें जो रिसाइकलिंग हो सकता है। और जहां जहां इस प्रकार जो सार्वजनिक स्थान हैं, रेलवे स्टेशन हो, होटल्स हो, सिनेमा थिएटर्स हो, या फिर बस स्टैंड हो, फैक्ट्रीज हो, इन जगहों पर जहां गंदगी जय बढ़ती है, बैरेज हॉल है, टेंपल है, वहां पर कुछ नियमों को लागू करना होगा। उसके बिना कोई परमानेंट स्वच्छाई की तरफ हम नहीं जा सकते हैं और वातावरण गंदा होगा। सरकार कितने भी पैसा खर्च करे और कितने भी नए नए कानून लाए, परिणाम अच्छे नहीं निकलेंगे। तो आदरणीय माननीय उपसभापति जी, स्वच्छता पहले मन की स्वच्छता से शुरू होती है, फिर घर की स्वच्छता से शुरू होती है, मोहल्ले की स्वच्छता से शुरू होती है, गांव की स्वच्छता से शुरू होती है, टेंपल की, स्कूल की, फैक्ट्री की, हर जगह पर इन स्वच्छताओं के तरफ जब हम ध्यान देंगे, फिर वेस्टेज का निर्माण अपने आप कम होगा। तो इस प्रकार का एक टोटल थिंकिंग का कॉम्प्रिहेंसिव बिल अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो 290 आदरणीय महात्मा गांधी जी के जन्मदिन को छोड़कर एक जो बहुत बड़ा स्वच्छता के बारे में उन्होंने काल दिया है, हर सप्ताह में कम से कम 2 घंटा हमें इसे समय देने के लिए कहा है, इसे हम सीरियसली ले। मैं ये चाहता हूँ ये सारे मिनिस्ट्री जो आते हैं, एनवायरनमेंट आती है, वाटर आती है, एग्रीकल्चर आता है, हेल्थ आता है, रेलवे आता है, जहाँ जहाँ ये गंदगी बढ़ते हैं ये सब मिनिस्ट्री इसमें आते हैं। इन सब मंत्रालयों को मिलकर जो जो खामियां हैं आज रहने वाले कानून के अंदर, उस खामियों को दूर करने के दृष्टि से कुछ नए अमेंडमेंट या नया बिल सरकार लेके आए। और उस समय शायद मैं जरूर मानूंगा टी सुब्बरामा रेड्डी जी भी खुले दिल से समर्थन करेंगे और हमारे पार्टी की जो हमारे नेता का सपना है कि स्वच्छ भारत की कल्पना वो साकार की दिशा में ले जाने के लिए अच्छा होगा। धन्यवाद। श्री बिशंबर प्रसाद निषाद। माननीय उपसभापति जी, जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है और ग्रामीण इलाके से लोग शहरों की तरफ रोजगार की तलाश में आ रहे हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, जितने शहरों के नाले हैं उनके किनारे ये जो भी सरकारी भूमि पड़ी है, वहाँ झुग्गी झोपड़ी बना करके इकट्ठे हो रहे हैं और जो कचरा उनसे निकल रहा है वो प्रदूषण का काम करता है। आज़ादी के 70 साल बीत गए, अभी सरकार ने कोई इसके लिए ठोस उपाय नहीं किए हैं। जितने देश के नगर पालिकाएँ हैं वहाँ कचरे के निपटान की बड़ी विषम परिस्थितियाँ हैं। नगर पालिकाओं के पास स्टाफ नहीं है और जो लोगों में मानसिकता बन गई है, अपने मकान का, अपने घर के अंदर का कचरा सड़क में डाल देंगे। अब उसको नगर पालिका उठाए, पशु आएंगे, सुअर
आवारा पशु सुअर उसको पूरे रास्ते भर में फैलाने का काम करेंगे, जिससे प्रदूषण फैलता है, उससे बीमारियां पैदा होती हैं, उससे तमाम लोग गंभीर बीमारियों से शिकार होते हैं। इसलिए ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कचरा निकलता है उसमें प्लास्टिक की मात्रा है, लोहा है, कांच है, तमाम तरह के अपशिष्ट उससे तैयार होते हैं। तो उसको अलग अलग करने के लिए देखने मिलता है कि जो इस धंधे में लोग लगे हैं महिलाओं का प्रयोग करते हैं, छोटे बच्चों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, पढ़ाई कर नहीं सकते। पेट के लिए छोटे छोटे बच्चों को जो है उन कचड़ों के ढेर में प्लास्टिक कांच बिनने के लिए देखने मिलता है कि कांच बिन रहे हैं, प्लास्टिक बिन रहे हैं, उसको बेच करके अपना पेट भरने का काम करते हैं। सड़कों के किनारे कुत्ते हैं, आवारा पशु दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अभी देश में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि तुरंत कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई सुअर, कुत्ता, बिल्ली या कोई भी पशु सड़क में ख़त्म हो जाए, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई नंबर डायल कर दे तुरंत उसको 10 मिनट में उठा के ले जाए। पता चलता है कि कोई जानवर ख़त्म हो गया, चाहे जंगली जानवर हो, उसी के ऊपर से सैकड़ों गाड़ियां जा रही हैं और उसका विष पूरे सड़क में फैल रहा है और सड़न पैदा हो रही है, जिससे कि तमाम बीमारियां पैदा हो रही हैं। मानवर देखने में मिला है कि जो बड़े बड़े होटल्स हैं उनका खाना जो बर्बाद होता है, इतना ज़्यादा फेंका जाता है कि उससे सड़ान, उससे गंदगी पैदा होती है। उसके निपटान की कोई व्यवस्था न तो होटल प्रबंधन के ऊपर उसके पास होती है और वो सीधे सड़क में या कहीं नाले में या खुले में डालने का काम करता है। जिस शादी ब्याह पार्टियों में इतना सब्जी और खाना इतना वेस्टेड होता है, उसको खुले सड़क में जब डाला जाता है, उससे जो उत्पन्न बीमारियां हैं उससे कौन लोग शिकार होते हैं? जो झुग्गी झोपड़ी में किराए रहते हैं, जो गरीब लोग रहते हैं, वो इसके शिकार होते हैं। और उन लोगों को जो है दवा के लिए पैसा भी नहीं है, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उनके लिए इस विधेयक, अगर ये बन जाएगा विधेयक, सारी व्यवस्था हो जाएगी। अभी एक प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा मंत्रियों को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा सब लोगों द्वारा सफाई अभियान शुरू किया गया, लेकिन अभी कारगर नहीं है। इसके लिए हमें प्राइमरी एजुकेशन से एक कानून बनाना पड़ेगा। आप HRD मिनिस्टर भी हैं माननीय मंत्री जी, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट लाना पड़ेगा और नीचे से बच्चों को जब सिखाया जाएगा, बच्चे अपने घर में जाएंगे, अपने माँ बाप से कहेंगे ये कचरा कहाँ फेंक रहे हैं। बच्चे जब अपने माँ बाप को सिखाएंगे और उसको कहाँ फेंकना चाहिए, ये शिक्षा में आ जाएगा, तो हम समझते हैं कि एक आदत बन जाएगी और हम लोग जो गंदगी फैलाते हैं उससे निपटान मिलेगी। दूसरी तरफ सरकार गंगा सफाई अभियान, नदियों की सफाई के लिए करोड़ों रुपया का बजट खर्च करेंगे। मानवर इसके लिए आपके पास कोई पुलिस फोर्स नहीं है। सबसे पहले तो जितने भी आपकी फैक्ट्रियां हैं शहरों किनारे या जहां भी फैक्ट्रियां हैं, उनके जो संयंत्र लगे हैं, ये कानून बनाना पड़ेगा और अधिकारियों को जवाबदेही करना पड़ेगा। जिसके क्षेत्र में ये इकाइयां लगी हुई हैं, उद्योग लगे हैं, अगर नदी में कचरा जाता है तो अधिकारी को जवाबदेही बनाई जाएगी। तो अपने आप अधिकारी उस उद्योग लगाने वाले के ऊपर जो है अंकुश लगाने का काम करेगा, नहीं उसको लाइसेंस निरस्त कर देगा, उसको ताला लगा देगा उसकी फैक्ट्री में। तब जा करके ये हम गंगा सफाई अभियान के लिए हम कर सकते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन विधेयक 2016 पर चर्चा के दौरान राज्यसभा के सदस्यों ने प्रभावी कचरा प्रबंधन की जरूरत पर बल दिया।
सदस्यों ने माना कि ठोस कचरे का प्रबंधन एक वैश्विक समस्या है, लेकिन इसका प्रभावकारी निदान स्थानीय स्तर पर ही संभव है। संसद संवाद के अगले अंक में ठोस कचरा प्रबंधन विधेयक पर बाकी सांसदों की राय और मानव संसाधन मंत्री के हस्तक्षेप के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम सभी लोग इसके बारे में बात ज़रूर करते हैं, लेकिन बाहर निकलते हैं, गंदगी हमें दिखती ही नहीं। अगर हमें नज़र आती तो हम ज़रूर इसके बारे में कुछ ना कुछ करते। जब तक हम गंदगी से नफ़रत नहीं करने लगेंगे, तब तक इसका समाधान नहीं होगा।